कायद्यानुसार गाडयेच्या बॉडीच्या भायर खंयचेंच सामान उरपाक जायना अशी गव्हर्मेंटाचो रूल आसा। पूण हांगा रूल सगळे धाब्यार दवरून कर्नाटकाच्यान एक 2 गाडयो गोंयान आयल्यो आनीक जेन्ना मादाळी आमचें चॅकपोस्ट आसा ह्या चॅकपोस्टा वयल्यान ह्यो गाडयो कशी सोडल्यो काय म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। हें जवळ जवळ 1.5 मिटर म्हाल भायर आसा आनी हें इतली दाट लोखण आसा की हाका जर खंयची गाडी मारली जाल्यार गाडयेचो चक्रा चूर जातलो, गाडयेचें कांयच मेळचें ना। पूण ह्यो गाडयो कोणी सोडल्यो आनी खंयच्या कायद्यानुसार सोडल्यो ही चवकशी जातली काय कितें, ना जाल्यार आमकां ह्या गेटींच्यो गरज आसा काय कितें म्हणून लोक प्रश्न करतात। तुम्ही पळोवपाक शकतात तें कितलें भायर आसा तें, आनी अशें भायर घालपाक बंदी आसा। आनी त्याच बरोबर आमचे जो रोड आसा पोळे टू मडगांव हो सिंगल रोड आशिल्ल्या कारणान हाका जर मारून कोणी मेलो जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो म्हूण मोठो प्रश्न आसा। कारण हें लोखण जें आसा पळय तें कितलें भायर आसा तुमी पळोवपाक शकतात। आनी ह्यो गाडयो गेटी वयल्यान एग्जॅक्ट कोण सोडटा हाची चवकशी जातली काय म्हूण लोक विचारतात। क्या कौन है आप? गाड़ी जो है ये कहाँ से आए माल? माल आ रहा छत्तीसगढ़ से। हाँ, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से आया है। क्या है ये? ब्रिज का सामान। आप अभी कर्नाटक से गोवा में आए हैं, आपको गेट लगती है, गेट के ऊपर किसने पूछा नहीं आपको? आपने को सर इस बारे में नहीं मालूम नहीं आपको, लेकिन कानून के हिसाब से ये गुनाह है, इतना बड़ा डाल के आया है, आपको किसी ने रोका टोका नहीं? वो तो सेठ लोगों का ड्राइवर लोगों को मालूम रहता, अपने को इस चीज़ से नहीं मतलब जी। ड्राइवर किधर है आपका? जा रहे हैं कंपनी देखने के। कंपनी में गया, लेकिन ये इतना बड़ा बाहर है, कोई मार के इसको मर सकता है। तो अंदर के अंदर रोड के नीचे उतरा है। ये अभी रोड के नीचे उतरा है, लेकिन आप रोड से जाएगा तो क्या करेगा? ये तो जैसे ऐसे टाइम में चलते ही नहीं हम लोग। कब चलते हैं? नाइट में, रात में, जैसे 2 घंटे 3 घंटे चलते बस। रात में कोई रास्ते पे आता नहीं? रात में कौन सा आता है, बहुत कम लोग आते तो उनको फाइट दे देते हैं, निकल। और कोई मर के गया तो भी उड़ा के जाने का, सही है ना? हे पळय तो सांगता रातचे आमी वतात, कोणा व्हडलोसो प्रॉब्लम जायना, जालो म्हूण कोणाक फरकूय पडना, कारण रातचे कोण कोणा उडोवन गेलो म्हूण कांय प्रॉब्लम ना, कारण हें चालूच आसा आमच्या गोंयांत। कर्नाटका टू गोवा ह्यो 2 गाडयो कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवपाक आयल्यात। कायद्यानुसार गाडयेच्या बॉडीच्या भायर खंयचें सामान उरपाक जायना अशी ऑर्डर आसा आनी ही ऑर्डर सगळ्यांनी पाळपाक जाय। पूण आमच्या गोंयांत कितें जालां, श्रीमंताक वेगळो कायदो आनी गरीबाक वेगळो कायदो। एक गरीब जर हेल्मेट सुद्दां घालनासतना गेलो जाल्यार ताका सोतल्ले वता, पूण व्हडले व्हडले मनीस कायदो घालून घेतात पूण तांचेर कारवाई करनात। ताका लागून लोक मागताले की श्रीमंताक वेगळो कायदो करचो, गरीबाक वेगळो करचो आनी गव्हर्मेंटाक वेगळो करचो, 3 कायदे करचे। कारण प्रत्येक पयशेकार आसा तो ह्या कायद्यांतल्यान सुटून वचूं आनी गरीब चिड्डून वचूं असो कायदो जावपाक जाय काय कितें अशें आतां लोक मागतात। ही जी गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयांत घेवन आयल्या तिथे पळय हें सामान कितलें भायर आसा पळोवपाक शकता तुमी। आनी हें पावरफूल सामान आशिल्ल्यान हाका जर कोणी मारत जाल्यार जाग्यार मरूं शकता। पूण आमची गोवा कर्नाटका टू गोवा ही गेट लागता आनी ह्या गेटीर पुलीस आसात आनी RTO आसा, तरी आसतना ह्यो गाडयो खंयच्या कायद्यानुसार सोडल्यो हें आमकां मिडिया मार्फत सांगचें अशें लोक मागतात। कारण कायद्यान जर ही गाडयो सोडपाक जायना जाल्यार ह्यो गाडयो कोण सोडटा त्या अधिकाऱ्यांची चवकशी जावची म्हूण लोक मागतात। कारण श्रीमंतांक कायदो लागना आनी गरिबांक कित्याक कायदो लागता असोय लोक प्रश्न करतात। आनी जर कायदो हो सगळ्या एकसारको आसा जाल्यार ह्या गाडयांचेर कित्याक कारवाई करनात म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।